हिमांशु भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। भाई आज बहुत जल्दी आ गए आप, बढ़िया है, शुक्रिया इतनी जल्दी आने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आ गए तो लाइक भी करके जाना। और हाँ ये भी बता देना कि डेली कमीशन किए है क्या नहीं, आज के डेली कमीशन किए है क्या नहीं अभी तक। फिलिक्स भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। भाई साहब दोनों अपनी इतने आज जल्दी, बहुत जल्दी आ गए आज बहुत जल्दी आ गए आप सभी। थैंक्स फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आप सभी का हमारी स्ट्रीम पर। यस हिमांशु भाई आपका हमारी स्ट्रीम पर बहुत बहुत स्वागत है। स्ट्रीम शुरू होते ही भाई साहब यार, तो अपने डायनामो भाई से भी बहुत बढ़िया हो गया हमारा काम तो। ओह थैंक यू। चलो भाई अभी डेली कमीशन पूरा कर लेता है, उसके बाद मेरा जो बचा हुआ क्वेस्ट है अच्छा कर लो मैं अपनी आईडी इम्प्रूव कर रहा हूँ, पास हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। फिलिक्स भाई ओपी इन द चैट भाई साहब, फिलिक्स भाई ओपी इन द चैट, वो पास हो चुके हैं अपने एग्ज़ाम में, बहुत बढ़िया। वैसे आप कहाँ से हो? भाई सब टॉपिक नहीं रखता मेरे हमको बोलने के लिए, ठीक है। कोलकाता से हूँ। ICSE भाई साहब, ICSE मतलब क्या होता है ये मुझे नहीं पता अभी तक। ICSE क्या होता है, मतलब इससे क्या होता है, मतलब आप क्या बन सकते हैं ये मतलब ये करने के बाद। Time for takeoff. Rain outlines your fate. Shake and stir. अच्छा दिल्ली का बोर्ड है क्या? My apologies. Time to act. No, my sword. स्कूल बोर्ड का नाम है ICSE बोर्ड, एक दिल्ली का है। अच्छा दिल्ली का है क्या ये? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। थ्री लाइव है भाई, 3 लाइव्स हैं। जल्द से चैट सेक्शन में आ जाओ, सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चलेगा, मगर चैट सेशन में आ जाओ, बातें करेंगे अपन। अच्छा CBSE जैसा है क्या? तो आपका 10th क्लास भी हो चुका होगा फिर अभी तक मेरे हिसाब से आपका 10th भी हो चुका होगा।
Body and mind. ओके ओके, चलेगा हिमांशु भाई, आ जाओ, आपने जो भी काम किया है 10th में। तो आप अभी के कौन से स्टैंडर्ड में हो अभी? बाय, हैव अ गुड टाइम। ओके ओके ओके, थैंक्स फॉर कमिंग, लाइक करके जाना। अभी 11th में हो क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया है भाई साहब। जो भी अभी आए हैं स्ट्रीम देखने, चैट सेक्शन में आ जाओ, बातें करेंगे। अगर किसी के पास अगर डन हो गया क्या, ऑलरेडी डन? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं पहले लाइक करता हूँ देन चैट। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे भाई साहब पहले, अरे यार ये क्या है? ओके, स्टैचू ऑफ द सेवन क्लियर हो चुका है अभी, फिर से कैथेड्रल में जाना पड़ेगा अपने को। मैं पहले लाइक करता हूँ। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है भाई, मेरी भी आदत है कहने का, पहले मैं लाइक करता हूँ बाद में स्ट्रीम देखता हूँ। बढ़िया है भाई साला, ये नॉट विशिंग अनटिल AR45 में मान ही लग रहा स्टार्टिंग से खेलने के लिए। अरे भाई पेशेंस रखना बहुत मुश्किल है, ठीक है? अगर मुझसे पूछोगे तो पेशेंस रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपने पास जो भी कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि फ्री टू प्ले कैरेक्टर है, जैसे टंगलिंग हो गया, टंगलिंग अपने काया, उसके बाद कोलेई, लेज़ा, बारबरा, एम्बर, भाई साहब इनसे खेलना मतलब भाई साहब ये बहुत हार्ड है, मगर भाई ये कैरेक्टर अच्छे हैं, ठीक है? ये 4 स्टार कैरेक्टर, लीज़ा हो गया, एम्बर हो गई, काया हो गया। सबसे बढ़िया काया लगता है मुझे, क्योंकि उसका प्ले स्टाइल बहुत अच्छा है। जैसा कि आप देख पाएंगे कि वो फिज़िकल डैमेज भी अच्छा है, क्रायो सपोर्ट भी अच्छा है, बर्स्ट सपोर्ट भी अच्छा है उसका, वो तीनों में काम आता। गेमिंग स्ट्रीट, यो भाई साहब, वेलकम टू द स्ट्रीम गेमिंग स्ट्रीट भाई। नहीं, स्ट्रीट गेमिंग भाई, स्ट्रीट गेमिंग मुझे कहना पसंद है, तो मेरे हिसाब से आप स्ट्रीट गेमिंग ठीक है। वेलकम टू द स्ट्रीम भाई, अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो स्ट्रीम को, क्योंकि हमारे पहली बार 10 लाइक्स हो चुके हैं। मेरी अगली स्ट्रीम मतलब पहली वाली जो एक दिन पहले मैंने करी थी रात को 11:30 बजे, कल रात को, उस पर 10 लाइक्स पूरे हो गए थे भाई, बढ़िया था। आप सभी का सपोर्ट मुझे मिला, शुक्रिया। और जो टोमेटो भाई साहब है, वो जो हमारे टोमेटो भाई साहब है, वो भी आए थे स्ट्रीम पर। टोमेटो कुरकुरे, हाँ टोमेटो हो गया, कुरकुरे हो गया, वो भाई साहब बहुत फनी है, वो भी आने चाहिए थे। Rain outlines your fate. Know my sword. ठीक है, ख़त्म। ब्लू फेस स्माइल भाई, अभी इसके बारे में देखा मैंने, ब्लू फेस स्माइल कैसा होता है। पेशेंस है, लेकिन न्यू एडवेंचर स्टार्ट हुआ है इसलिए मैंने नहीं, पेशेंस है लेकिन न्यू एडवेंचर स्टार्ट हुआ है इसलिए मैंने नहीं है, लेकिन प्रिमोजेम्स बहुत सारे मिल रहे हैं इसलिए मज़ा आ रहा है।
भाई साहब पहले तो प्रीमोजेम्स बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है, प्रीमोजेम्स मिलते हैं, रेजिन मिल जाते हैं, ढेर सारे रेजिन मिल जाते हैं। तो जो मैंने गलती करी वो आप बिल्कुल मत करो, क्योंकि AR45 को हिट करने के बाद, ठीक है, AR45 को हिट करने के बाद आपको पहले तो एक अच्छा कैरेक्टर ढूंढना होगा। उस समय जो मतलब उस समय जो कैरेक्टर आएगा, ठीक है, उस समय जो कैरेक्टर आएगा वो अच्छा होना चाहिए, और उसको पुल करने के बाद उसको ही बिल्ड करो अच्छे तरीके से। और जैसे कि मैंने एक गलती करी थी, ठीक है, मैंने सबसे पहला मेरा कैरेक्टर ये इसको बिल्ड किया था मैंने, रेजर को, पोपिस वाले फिल्म के साथ, पोपिस वाले फिल्म के साथ उसको मैंने बिल्ड किया था। तो प्रॉब्लम ये हो गई थी भाई साहब, मतलब यार मेरे साथ बहुत सारे रेजिन वेस्ट हो गए थे मेरे। तो ऐसी गलती आप मत करना, ठीक है, ऐसी गलती आप मत करना। पीस ऑफ एडवाइस, काजुआ पुल करो। अच्छा हाँ यार, ये भी अच्छा है काजुआ, मतलब अच्छा मतलब क्या बोलते हैं इसको, अच्छा EM सपोर्ट है, EM सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है ये काजुआ। उसको पहले पुल करो, अपना पेशेंस थोड़ा बाजू में हटा दो, पहले उसको पुल करो। बहुत अच्छा कैरेक्टर है वो। मुझे क्या करना था भूल गया मैं, हमें ये इवेंट पूरा करना था भाई साहब, ये वाला। अब ये बाकी है, इसको पूरा करेंगे। 2 घंटे बाकी है हमारे पास, 2 घंटों के अंदर मुझे ये पूरा करना है, ठीक है। अभी 2 घंटे के बाद अपन एलिमेंटल बफ मिलता है, हाँ एलिमेंटल बफ जो भी हो, एलिमेंटल बफ हो गया, एलिमेंटल मास्टरी प्रोवाइड करता है, जो भी हो। हमारे स्ट्रीट भाई ने बता दिया आपको, तो वही काफ़ी है। हमसे ज़्यादा जानकारी उनके पास है, अगर कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो उनसे जाकर पूछ लेना, ठीक है। कुछ भी हेल्प चाहिए तो उनसे जाकर पूछ लेना, वो अच्छे एडवाइज़र है, कौन सा कैरेक्टर पुल करना चाहिए और कौन सा नहीं। 49 हिट हो चुका है। रिटर्न टू द मेन मेन्यू। चलो भाई, अभी ये क्वेस्ट बाकी था मेरा, इसको जल्द से जल्द पूरा कर लेता मैं अभी। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद थोड़ी आर्टिफैक्ट फार्मिंग करेंगे। फोपिस गिल्डेड और फोपिस डीपवुड जो। Thank you all for your excellent performance. And that brings this year's Introdarshon Championship to a close. पूछा एंड मैं बताऊं, ऐसा हो नहीं। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। वैसे बंदे होने चाहिए यार स्ट्रीम पर, जिनको हमसे ज़्यादा नॉलेज होना। तो हमको खेलने में मतलब कुछ भी अड़चन आ गई, ठीक है, मुझे भी खेलने में अगर कोई दिक्कत आ गई तो मेरे व्यूवर्स जो है अभी देख रहे हैं मेरे मेंबर्स, वो बता देते हैं। इसलिए मुझे कोई भी क्वेस्ट पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उन्होंने पहले क्वेस्ट करा होता है, इसीलिए। क्या बात बहुत बढ़िया। तालियां बजाई जाए, तालियां, बहुत बढ़िया। Finally, it gives me great pleasure to invite our champion, Kaveh, to the stage to receive his award. Come to the stage, Kaveh. Welcome, तालिया का। Typically at this point, we would crown our champion with the diadem as well as presenting them with their award. अच्छा, चलो। However, we have just received word that Kaveh has inherited Sachin's estate and made the decision to donate it all to charitable causes. अरे वाह। हाँ, मेरे को बहुत सफरिंग करना पड़ रहा था अर्ली गेम प्ले में। अब भाई साहब बहुत मुझे बहुत सफरिंग करने का पड़ा था। मतलब जो मेरा पहला अकाउंट है उसमें बहुत सारे मैंने जो रिसोर्स वगैरह, ठीक है। एक बात बता दूँ, जो मैंने पहले वाला जो मेरा अकाउंट था उस पर मैंने बहुत सारे रिसोर्सेस ऐसे ही, मतलब किसी भी कैरेक्टर को लेवल अप करने के लिए मैंने इस्तेमाल कर दिए। मैं क्या सोच रहा था कि जितने मेरे पास कैरेक्टर है उनको सभी को मैं लेवल अप करूँगा, मगर उतने
F2P प्लेयर के लिए उतने काफ़ी नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास मटेरियल ज़्यादा नहीं होता, और मटेरियल की कमी होने की वजह से भाई बहुत दिक्कत आती है। इसीलिए ये गेम जो है अभी रिसोर्स मैनेजमेंट का है, ये समझकर ही चलो, और उसका गाइड वीडियो देखकर ही, उसका एक गाइड वीडियो देखकर ही बस गेम खेलना पड़ता है भाई। अगर वो नहीं करोगे तो बहुत महंगा जाएगा फिर आपको। तो इसका सबसे पहले एक ही इलाज है, पहले गाइड वीडियो देखो कैसे खेलना होता है, उसके बाद गेम खेलो। मैंने वो गलती करी थी, इसलिए मैंने दूसरा अकाउंट बना दिया और इसको प्रॉपरली खेल पा रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल तो। Sachine's estate is getting donated? So much Mora. And he gave it all up? Kave's generosity will give many struggling families the chance to change their lives for the better. Of course, without the diadem and prize money to present, this makes the award ceremony a little more concise than expected. Would you like to say a few words, Kave? I'm sure many of our audience, like myself, are curious to learn why you decided to give all this wealth away. I'm not entirely sure what I should say under these circumstances. I'm glad to have won, even though I'd say luck played a big part in that. अरे वाह भाई साहब, पैसे होने के बाद उसका घमंड नहीं होना चाहिए, इस गेम में पता चल रहा है भाई। इस गेम से बहुत कुछ सीखने को मिला, ठीक है, मुझे इस गेम से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, तो ये अभी आपको शेयर करना चाहूँगा मैं। गेम अच्छा है भाई, गेम के बारे में उसको नाम रखने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि इसमें सीखने को भी मिलता और एक्सप्लोर करने को भी मिलता यार। बहुत बढ़िया गेम है यार। ये जो कॉन्सेप्ट इन गेम वालों ने बनाया ना, इस गेम को मतलब हमारे सामने लाया है, वो काबिल तारीफ़ है भाई, काबिल तारीफ़ है उनका गेम। और दूसरी बात ये रही भाई, गेम जो है भाई, गेम मतलब कैजुअली खेला करो, और स्टोरी भाई, स्टोरी पूरी देखा करो यार, स्टोरी को स्किप मत करा करो, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा एफर्ट लगा दिया होता है इस स्टोरी को बनाने में। क्योंकि स्टोरी ऐसे नहीं बनती, ठीक है, स्टोरी ऐसे नहीं बनती, क्योंकि ये जो गेम है एक मतलब एक सीन से, एक सीन हो गया, एक कट सीन हो गया, एक पार्ट हो गया, मतलब हर एक पार्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और सभी कैरेक्टर्स का उनका अपना अपना पास्ट होता है, उनको सामने लाते हैं ये। यार ये क्या है, मतलब बैकग्राउंड नॉइस, पागल छोकरा यार, ये रात को चिल्लाता रहता गधा कहीं का, कान के नीचे देना पड़ता है इसके कभी कभी। As for why I want to give the Mora away, I don't support Sachine's views, and I don't want to take his Mora. With a lot of things in life, people need to experience them for themselves. अरे हाँ ना It यार, shouldn't be up to one person to make a judgment on. Not him, and not me either. ये पागल खोपड़ी के कहीं के यार, मतलब दिमाग ख़राब कर देते, कंसंट्रेशन नहीं, मतलब एकाग्रता नहीं करने देते यार। मतलब गेम में अपन अगर कोई बोले, मतलब कुछ ना कुछ तो अपन दिमाग में आ जाता, अगर वो बोलने की कोशिश करे तो बीच में यार ये मुँह घुसा देते, बेवकूफ़ कहीं का। Anyway, this isn't really the time and place for such weighty and complicated topics. So, I guess that's all. I'll leave it there. Thanks very much. थैंक यू कावे, आप जैसा बड़ा दिल किसी का नहीं होता भाई, रियल लाइफ में तो नहीं भाई। हो रियल लाइफ में हमारे रतन टाटा है, ठीक है, रतन टाटा वो रियल लाइफ में कावे जैसे है, जो कि अपना 60% प्रॉपर्टी दान में देते हैं, ठीक है, मतलब 60% उनकी जो कमाई होती है वो दान में देते हैं, 40% खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं भाई। उनके जैसा कोई नहीं इंडिया में। अरे यार ये मतलब ऐसे ही मुझे मत भेजा करो यार, मुझे समझ में ना आता आप क्या बोलना चाहते हो। हैंड ऑरेंज कर्विंग आइज, फेस ऑरेंज बीटिंग नेल्स। हाँ Oh, Kave, just one ऐसा moment. इंसान को सल्यूट। हाँ भाई साहब, सल्यूट होना चाहिए यार। स्टोरी को अच्छी तरीके से देखा करो सिर्फ, ठीक है, स्टोरी को अच्छी तरीके से देखा करो। मैं जो भी क्वेस्ट करता हूँ गेम के लोर में देखता हूँ भाई, ठीक है। तो आपको अगर गेम प्ले पसंद आ रहा हो तो भाई अच्छी बात है, अगर ऐसे गेम प्ले आपको पसंद आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है।
दूसरे देशों में गेम प्ले नहीं बना सकता, क्योंकि भाई सारे के सारे बंदे एक जैसे नहीं होते। आप हमारी पांचों उंगलियां भी एक जैसे नहीं है, तो हम सारे के सारे बंदे कैसे एक जैसे हो सकते हैं। मैंने बाकी सारे बंदे देखे हैं कि बार बार ग्राइंड करने के लिए, बार बार अपना डैमेज बढ़ाने के लिए ज़्यादा मैं स्टोरी की नहीं करता। ओके ओके ओके, थैंक यू, कोई तो मेरे जैसा मिला। While this is a short and sweet award ceremony, we do still have a prize to present you with. Please take this limited edition Genius Invocation TCG card. अरे साइनो ये लेना चाहता था, साइनो का चेहरा यार, सॉरी साइनो। Additionally, your champion status will be logged in your record. This means that the sages will give priority consideration to any future project proposals you submit. All right, I'll take the card. But as for project proposals, forget it. In that case, I declare the award ceremony over. Let's give our champion Kave one last big round of applause. बहुत लोगों को जेसिन का लोर नहीं पता भाई, ठीक है। जेसिन का लोर बहुत अच्छा है, उसके बारे में जितना स्टडी करो ना भाई कम ही है। तालिया, बहुत बढ़िया। I still don't really get it. The sum of Mora would have been enough for me to live in luxury for my entire life. That just means you're not strange enough to understand the way that geniuses think. Come on, we've still got the whole Wisdom Gala to explore. पैसों के लिए पीछे पीछे भागना भाई साहब। हाँ, ऐसे लोग तो बहुत सारे हैं हमारी दुनिया में। लोअर बहुत डार्क, सफरिंग एंड सैड है। हाँ सही कहा, सही कहा। Glad that's over. I think I'm quite good at giving speeches, but this one was just so tiring. और हाँ, लोअर बहुत डार्क, सफरिंग एंड सैड है भाई। तो सफरिंग एंड सैड, तो इसके ये जो शब्द है मेरे हिसाब से, मैंने जो नारुतो का है, ठीक है, नारुतो शिपुडेन देखा होगा आपने, जो मादारा उचिया होता है, ठीक है, मादारा उचिया जो होता है, तो उसमें एक उसका एक डायलॉग रहता है, वो बहुत फेमस है भाई। मादारा उचिया का डायलॉग बहुत फेमस है, मुझे बहुत पसंद आता है उसका डायलॉग। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो पहले उसको देखो भाई, बहुत अच्छी एनिमे है भाई नारुतो। You should be proud of that? I suppose. Oh, wait. Sino said he wanted the card, didn't he? And now I have it, right here. नारुतो को सबको पता है, नारुतो सबको पता है भाई, सभी को नहीं यार। जो जेंशिन जैसे एनिमे, मतलब एनिमे से जैसे गेम खेलते हैं, उनको पता है, सभी लोगों को नहीं पता नारुतो क्या है। So you're gonna give it to him? But if it's a rare one, you should be able to make a tidy sum of more off it. Why would I do that? It's of no use to me whatsoever. I may as well just give it to him. Could you pass it on to him for me when you next see him? अरे भाई साहब, ये तो अपना कार्ड भी दे रहा है यार, ये तो दानवीर निकला। काफ है, कैरेक्टर तो मस्त है यार ये। Whoa! This is a super big deal. You should do it yourself. Come on, let's go find Sino. नज़दीकी होगा ये साइनो। Huh? But I was gonna rest for a while longer. Hey, stop pulling my hair! किसने खींचा वो? पायमा ने खींचा क्या? जिस बंदे को एनिमे का बारे में पता नहीं, बस बंदे को पता है नारुतो। हाँ वो तो सही है, ये बात आपने सही कहा भाई। फाइन साइनो, ठीक है। अभी देखो, अगर यहाँ पर कट सीन आएगा तो मैं अभी वॉइस ओवर बंद कर दूँगा, ठीक है, वॉइस ओवर बंद कर दूँगा, क्योंकि हम कट सीन का मज़ा लेना चाहते हैं। मगर मुझे पता नहीं यहाँ पर कट सीन आएगा या नहीं, अगर आएगा तो अच्छा है, नहीं तो कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं। What you looking at, Sino? I'm still thinking about the Sachin issue.
What brings you here? Well, they gave me this limited edition Genius Invocation card, and I figured you'd have more use for it than I. But it's a limited edition. Are you sure you want to give it to me? कर्सिन नहीं आएगा. अच्छा, ओके. What else would I do with it? I have no use for it. Okay. But it's limited edition. Kaveh, are you in trouble? You don't have to do all this. Just tell me what's wrong and I will help. अरे भाई साहब, साइनो को पता है उसकी क्या अहमियत है उस कार्ड की. बढ़िया यार. That's not what I meant at all. Yes, I have all sorts of problems, but that has absolutely nothing to do with this card. I'll figure my own issues out by myself. I'll figure my own issues out by myself. मैं अपने प्रॉब्लम्स खुद ही हल करूँगा. बढ़िया यार ये. तो इसको साइनो की ज़रूरत नहीं है. Well done, Kaveh. All right. In that case, I accept your generosity. Okay. But now that I realize that you have no concept of its value, I cannot simply take it from you. How about this? I shall buy it from you at a fair price. Namely, the price that the previous limited edition card sold for. Oh, come on. It's just one card. How much could it really be worth? 1 million more at the very least. 1 million. अरे भाई साहब, थोड़े मुझे भी दे देना. 500,000 मुझे भी दे देना भाई. मुझे बहुत ज़रूरत है उसकी. How much? A million more? If you feel that's too low, I can go a little higher. 1 million more for a card? But you already have a whole bunch of these, shiny ones, don't you? I saw your deck last time we played. 1 million. But you only hold a bunch of Not cards. every card is this valuable, and some cards are exquisitely designed, but not rare. अच्छा. Huh. Well, I guess they must pay you plenty to be General Mahamatra if you're splashing out on things like this. पैसे सिर्फ उड़ाता रहता है ये, मुझे ऐसा लगता है भाई. सिर्फ पैसे उड़ाने के लिए बना ये महामात्रा. जनरल महामात्रा. But really, it's fine. I'd feel bad taking Mora from a friend. इसको भी मतलब मोरा नहीं चाहिए. Don't feel bad. I save a lot. I can spare the Mora for this card. बढ़िया है. You don't spend all your savings on your hobbies, do you? You should watch that, you know. You definitely don't want to end up borrowing money in a moment of impulsivity. Hey. Living with debt is miserable. हो, सब लोग का अपना अपना शौक है भाई. अच्छी बात है. तो साइनो का अपना कार्ड लेने का शौक है उसका. Sounds like you're speaking from personal experience. I guess you've been through a lot. I don't want to talk about it. सभी का कुछ ना कुछ तो प्राइवेट In रहता है. that case, maybe you're the one who should be listening to your advice. हाँ, कुछ बातें सभी के सामने की जा सकती. ठीक है. In any case, I, Sino, will take this precious card, and it shall join the deck of destiny. Kaveh, come with me in a few moments to collect the Mora. Thanks to you, I have achieved my goal for participating in this tournament. एक्शन तो बहुत भारी करता है यार साइनो ये. ओवर एक्टिंग मास्टर लगता मुझे. All right, if you insist. Far be it from me to refuse your courtesy any further. Well, at least I'll be able to keep on top of my bills this month. Maybe I'll even have some left over. In fact, let me treat you all to a meal later. Bring Tainari and Kale too. तो हमको खाना मिलेगा. हाँ, अभी पायमन फिर से शुरू हो जाएगा. अरे रिडीम कोड लिया था क्या तुमने? भाई मैंने पोस्ट किया था. मैंने अपने डिस्कॉर्ड पर नहीं, हमारे डिस्कॉर्ड पर जेंशिन कोड्स में वो सारे के सारे कोड्स
पहले ही मतलब डाल दिए हैं और सभी को टैग किया है उसमें, ठीक है, जाकर देख लो। अगर तुम मुझे आप मुझे बता रहे हो तो आपने पहले किया होगा, मगर मैंने भी मतलब भाई आने के बाद पहले वो काम किया, उसके बाद गेम प्ले खेला मैंने। Paima wonders how the other contestants are doing. Let's go check in with them, shall we? Since we're guest commentators and all. सभी बिजी हैं। अरे यार ये क्या माजरा है इसका। सब कोड रिलीज हुआ था, बहस का सत हिदाया था, उसका साथ क्या बोलना चाहते हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। A blade embraces its... ए यार तुम्ही काय करा, सरळ मध्ये जाणार तुम्ही, ते मच्छर जातील सगळं तुम्हाला। हां बरे तू लावलं का? लावलं पाहिलं तू? बरे ना मग। अरे भाई हम आपसे बात नहीं कर रहे थे मराठी में, मेरी दादी से बात कर रहा था मैं। I'd like to purchase some Vasanti grass. Do you have any? होने का 7 सेकंड बाद मैंने, अच्छा 5 सेकंड बाद ही दिया था। अच्छा थैंक यू। मैंने पहले ही रिडीम कर दी भाई, और शुक्रिया। और अगर आपके पास हाँ पता है, तो देखो तो बात ऐसी है, मैंने आपके कोड नहीं देखे, मगर अगर आप कोड देना चाहते हो तो डायरेक्ट अपने जेंशिन कोड्स में जाकर पोस्ट कीजिए, पब्लिक चैट में नहीं, और सभी को मतलब ये कर दीजिए, एवरीवन को टैग कर दीजिए। I'm sorry, Mr. Forest Watcher, but we've been closed for the past few days. Closed? Now that's odd. It's my first time hearing you say something like that. It's a long story. Some of our goods were stolen recently. They were mechanical parts that we got from the academia. Although they're old models, they still fetch a good price on the market. तो किती वेळ चालणार आहे सगळं? तुम रात्रभर चालत राहणार ते, 12 उठल्या तुला ते करावं लागेल मग। तैगनारी का स्टोरी क्वेस्ट, अरे यार ये भाई साहब मुझे मतलब ये पूरे के पूरे करने पड़ेंगे अभी। Our caravans had to pull together Mora to afford those parts. अरे यार They've been lost. We'll likely come up short this trip. इसलिए मैं कभी कभी क्या करता हूँ, जो स्टोरी क्वेस्ट है ना तो पहले पूरा कर देता हूँ, क्योंकि मतलब ये जो इवेंट रहता है ना, इवेंट कोई मतलब आर्कॉन क्वेस्ट हो गया, इवेंट हो गया, तो इसमें दिक्कत नहीं करनी चाहिए, इसलिए यार बोरिंग कार्यक्रम। All the merchants talked it over and we decided to raise the prices of our remaining inventory. Until this plan takes effect, none of us can privately sell anything. I don't get it. If these goods are so important, then why not think of a way to get them back? Raising prices won't solve anything. At best, you're shoving the consequences of the robbery onto your customers. Mr. Forest Watcher, it's not that we don't want to. It's just the thief disappeared into the deepest parts of the forest. अच्छा ठीक है यार, मतलब ये स्टोरी क्वेस्ट करने में मतलब बहुत देर लग जाएगी, फिर तो हमारा वो इवेंट का जो क्वेस्ट है वो पूरा नहीं हो पाएगा। We asked around and apparently the forest has been very unusual as of late. Anyone who goes in experiences mental anomalies. We can't keep waiting out here for the thief to come out. All we could do is come up with another solution. So the bandit hid in the contaminated region after stealing those mechanical parts? How many people were there in total?
Were they not affected by the contaminated region? That crook came from the contaminated region. As for how many, there weren't any people. No people? Even if I tell you, you might not believe me. Fine. The thief that stole our parts was a huge mechanical crab. Mechanical crab. What the heck? The Avidia forest has creatures like that? Didn't see any Avidia's forest. To be honest, I'd rather not think about it. It moved too skillfully to be new at this. It came out of nowhere. Before we could react, it swiped our goods and ran away. Acha. We were all shocked. By the time we came to our senses, the thief was already long gone. I see. If we help you retrieve your stolen goods, then business will return to normal? Oh, but of course! Not only that, but you'll become one of our caravan's VIPs on all future purchases of any... बहुत ज़्यादा बोल गया लगता है ये. Enough. Tell me something that's actually useful. Any leads on that mechanical crab? इसका चेहरा देखो. Maybe one. After our goods were stolen, we specifically got someone to assess the situation. भाई इसका ताइनारी का लुक्स बहुत अच्छा है यार. पीछे से पूछ और उसको कान भी है. If you're interested, you can go and talk to them. All right, we'll go and have a word. That mechanical crab is fast, strong, and a pain to deal with. 10 of us might not even be able to take that thing head on. Didn't academia ban research on mechanical life forms years ago? Where did that thing come from? Our salaries even got slashed because of it. Who would have thought that that robber wasn't a human, but a mechanical crab? This is rough. अरे यार ये तो स्टोरी क्वेस्ट यार मुझे ये थोड़ा बोरिंग लग रहा. एक्शन का टाइम देखने को पड़ेगा. After the goods were stolen, I made multiple inquiries with nearby caravans and residents. It turns out that many others have also been robbed by that crooked crab. अच्छा तो एक क्रैब ने सारा का सारा मटेरियल इनका चुरा लिया है. तो हमको इसको इन्वेस्टिगेशन मतलब भाई यार अंग्रेजी थोड़ी कठिन है. इन्वेस्टिगेशन तलाश करनी पड़ेगी उस क्रैब की. However, the crab only seems to be interested in machinery. Doesn't even bat an eye at other valuables. The caravan carrying a large amount of Mora had an uneventful trip, but another caravan had a child whose metal toy was taken. अच्छा तो इसको पैसे की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मैकेनिक्स की ज़रूरत है उस क्रैब को. Whatever the case, that thing is a scourge. We'll eventually think of a way to get rid of it. I heard from the caravanners that there have been a lot of robberies lately, but we haven't been affected. We don't normally see the mechanical crab, and it doesn't disturb our daily lives. It only shows up when the caravans are here, and it runs back to the contaminated region after it's done making a mess. You haven't tried capturing it? We have, but it's too agile and fast. However, we did unexpectedly learn something the last time we tried to capture it. It apparently lives in the deepest part of the forest. So instead of immediately moving its spoils, it first hides them nearby. Once its stash grows large enough, it moves everything in one go. You'll have to move fast if you want those goods back. तो पहले तो हमें सभी तरफ से जानकारी लेनी पड़ी उसके बारे में और क्रैब के बारे में. फिर से इसके पास आना पड़ा अभी. How are things? Did you make any progress? We learned of its behaviors, but much still remains unclear. Assuming normal operational status, mechanical constructs generally act according to their given commands. अच्छा हाँ ठीक है वो भी बात है क्योंकि उनको कमांड देने के बाद ही वो एक्शन करते हैं. If I were its owner,
I'd command it to steal more valuable things, or the mora you made. That would be the most efficient method, but it only goes after mechanical components. This doesn't make any sense. अच्छा, हाँ ये भी बात है. सिर्फ मैकेनिकल कंपोनेंट्स मांग रहा है, सिर्फ मोरा नहीं, सिर्फ ये मैकेनिकल कंपोनेंट्स. कुछ तो भी बड़ा करने का सोच रहा है लगता है ये चोर. Right. It's really weird. So, you all found a way to retrieve our goods? Do you have any more mechanical parts with you? Yes, I still have a small bag of samples. They weren't taken since I keep them on me at all times. Oh, are you planning to... Yes, माहिर भाई. आप जो सोच रहे हैं हम वैसा ही करने का प्रयास कर रहे हैं अभी. Under constant external conditions, organisms rarely initiate changes in their habits. Here's what we know so far. It has mechanical composition, it lives in the contaminated region, and it comes out to steal mechanical components. अच्छा, तो ये बात है, ये बात सीखी ताइनारी ने. भाई साहब ये अच्छा बन रहा है यार, ये दिमाग वाला. If we have said components, we can lure it out, capture it, and then make observations for further conclusions. Well, chatting like this won't get us anywhere. We're only wasting time. You're right. We don't have any other options right now. This bag of samples is all yours, Mr. Forest Watcher. If you can get our goods back, the caravans will reward you generously. Okay. We don't need anything in return, but I'll be keeping this bag. I may have other uses for it later. We'll also need to borrow a something list. Our act has to be convincing if we want the crab to fall for it. Oh, yeah, no problem at all. If it means getting our things back, you can even borrow me to do whatever you need. इसको भी उधार ले सकते हैं माहिर. मैं तो कुछ काम का नहीं है, तो यहाँ पर बैठ. I'll have to decline that offer. Anyway, we'll use the mechanical components and Sumpter Beast to pose as a transiting caravan and lure out the crab. Once it appears, capture it. I leave the timing to you. तो अच्छा, तो इसको कैप्चर करना पड़ेगा क्रैब को. Don't worry, we're professionals. तो हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा. ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है. मैकेनिकल क्रैब्स. Looking at the trade routes and the contaminated region's current perimeter, the goods were likely stolen somewhere around here. अच्छा, ठीक है. Then let's get to it. We'll definitely capture that criminal crab. Okay. We'll start from here and have the Sumpter Beast with the components on board lead the way. ठीक है. This Sumpter Beast isn't familiar with us yet, so be calm and take your time with it. The Sumpter Beast went ahead. Let's keep up with it. Huh? Why did it stop? Looks like it's loafing around. Or maybe it's hungry. The caravanners grew disheartened after their goods were stolen, so they probably didn't feed their animals as scheduled. Let's give it something to eat. फीड करना पड़ता है. All right, it's moving again. अच्छा, आ गया. ये क्या ये? Did you hear something? कोलू कोलू. Is that the mechanical crab the caravan was talking about? It's charging straight at us!
It looks strong. Be careful. अच्छा, इसके तो पहले भी हमें लड़े वाला है. Think you can bully me? Rain outlines your fate. Let me weave you a verse. Sakura swirl. खत्म. Just try to escape this time, you naughty caravan robbing crab! Hey, playing dumb won't save you. Spill it! Why are you stealing so many mechanical parts? It doesn't seem capable of comprehending complex questions. Keep an eye on it. I'll search around the area for the caravan's goods. ये नीले एनर्जी कहाँ से भाई चमक रही है? I don't know why you're stealing mechanical parts, but they don't belong to you. Stolen items must be returned to their rightful owners. Any objections? You came from the depths of the contaminated region, right? How about you help us with something? If you take us there, I'll give you some mechanical parts as a reward. It reacted! भाई साहब, अच्छा यार ये तो इसकी बातें समझता है. We can't be certain yet. Its excitement may be a simple programmed response upon seeing mechanical components. वो भी हो सकता है. Okay, so you want the crab to lead us into the contaminated region? ठीक है. क्रैब तो भाई बहुत एक्साइटेड दिख रहा मुझे. That's right. The contaminated region has a large and currently expanding perimeter, so it would be difficult to conduct a thorough search. If we charge straight in, we'll get lost like headless pigeons. Also, our new friend here seems to be full of secrets. I've been studying this contaminated region recently, and I have a hypothesis of my own. So to be absolutely safe, it would be best to have a guide lead the way. Paimon gets it now. Does this scuttler understand what you're saying? It doesn't have to, as long as it isn't hostile towards us. I gave it some components that it will definitely take back to the contaminated region. So long as it doesn't attack us, we can simply follow along. It seems to be really happy. Listen to me. Wait for us here. No running off. We'll be back soon. If you're still here when we return, I'll give you another mechanical part as a reward. Does that count as understanding us? I'm not sure. But our priorities are to retrieve the mechanical components and to purchase Vasanti grass to make medicine with. We should return. But before we do, we need to set up a few traps. Can't have that crab escaping. तो ये है उसके लिए यहाँ पर ना भागे इसलिए मैकेनिकल क्रैब बढ़िया है. गेमिंग स्टूडेंट भाई आप यहाँ पर हो क्या? नहीं, कौन है यहाँ पर? कोई है क्या नहीं यहाँ पर यार भाई साहब? क्या मैं सिर्फ अकेले से मतलब अकेले बात कर रहा हूँ? सबसे अकेले के बात करना बोरिंग होता है यार. Oh! These are the mechanical parts that were stolen! You really got them back for us! Thank you all so very much. I don't know how I can repay you. Wait. Didn't you want to purchase Vasanti grass? Don't worry about the price. They're on the house. How many do you need? 2 is enough. No, that won't do. Here, I'll throw in some more. No need. I've already received a reward from you. Reward? You mean that bag of mechanical parts? They aren't worth much compared to this merchandise. But those parts are very useful to me. Just like the Vasanti grass. I retrieved the things you needed, and you gave me what I needed in return. We're even.
Oh, and before we go, बढ़िया just ये a reminder. सौदा. The forest has an intricate and biodiverse ecosystem. Even if there were no mechanical crabs, other dangers are still present. Take caution on this route. ये बात सही कहता है नारी ने. Noted. Thank you all ever so much. Let's return to the village. The earlier we can give the child medicine, the sooner he'll start feeling better. फिर से उनके विलेज में जाना पड़ेगा यार. ये बोरिंग क्वेस्ट हो रहा मुझे. Traveler and Paimon. Hi, Kolei. Master, I prepared the pharmaceutical equipment. Do you need me to help grind the medicine? Yes. No need. A precise dosage is required this time, so I'll do it myself. Oh, okay. अरे यार इसको नाराज कर दिया इसने. But once I'm done, you can deliver the medication to the child. He gets a little nervous when I'm around for too long. I don't think he finds me very approachable. I'll go prepare the medication. Traveler, give me a hand. Even then I prepare some medicine. How is he? Doing any better? Yes. I feel like he's doing a lot better. And his temperature is returning to normal. That's wonderful! Oh yeah, he asked me to tell you that Suna came by earlier, and he told her everything about the toy. Suna didn't get mad, so he wanted to thank you. Can I ask what happened? It's nothing. Did you prepare the traveling gear that I asked you to? Of course I did. Are you going somewhere far away? Yes, we're going to the contaminated region. Judging by its size, we will likely have to stay overnight. I'm leaving everything to you while I'm gone. Huh? But I can't even begin to compare to you. Many things are learned by doing, and once they've been done, you'll realize that they weren't as difficult as you once thought they were. Yes. Many things are learned by doing. के करने के बाद ही आपको पता चलता है. And once they've been done, एक बार होने के बाद you realize that they weren't difficult as you once thought they were. तो एक बार करने के बाद आपको वो डिफिकल्ट नहीं लगता. ये बात सही कही तायनारी ने. Deal with problems as you yourself see fit. You don't have to emulate me. Yes. That's right. You'll do great, Kale. All right, then I'll do my best. Yes, Kale. Master, Traveler, Paimon, take care of yourselves. You put too much confidence in me. Anyway, like you said, things will likely be uneventful. Yes, let's return and find that crab. अच्छा. चलो उस क्रैब को फिर से हमको ढूंढना पड़ेगा.
यहीं पर होगा वो कहाँ भागेगा? लगता है भाग गया वो। We're here. It should be... Huh? Where's the crab? Did it secretly scuttle away? The traps weren't triggered, so it should still be here. Odd. अरे यहाँ पर है वो। You honored our agreement and waited here until we returned. बहुत बढ़िया। As such, I'll hold up my end and give you another mechanical part. Keep it safe. I'm not giving you another one if you lose it. Glad you're satisfied. If you want more mechanical parts, take us deeper into the contaminated region. I want to see what happened there. What caused the Avidia forest to become like this? So this is the contaminated region that everyone's been talking about. Oh, it definitely looks different from normal. It's like really creepy and suffocating. Do you feel unwell at all? Good. It's as I predicted. Elemental power confers a degree of resistance against the contaminated region's influence. Yes. How do you know that? Well, I haven't entered the contaminated region for a proper investigation, but I've conducted quite a few controlled experiments. My observations during our time here have all but confirmed my hypothesis. Look at these flowers. How are they different from normal? This flower species is formerly known as the Sumeru rose, but it is also known as the leyline lodestar. Leyline. They're sensitive to ley lines and emit varying amounts of light in response. Excessive brightness indicates a dangerous level of ley line activity in the surrounding area. From the looks of things, the ley lines around here are already out of control. You're saying the contamination here is coming from ley lines? I can't confirm that right now, but I think that is the case. Let's take another look around and see if we can discover more clues. You know, we haven't seen any animals this entire time. The birds used to chirp really loudly, and there were a lot of foxes. The contaminated region currently appears to have a critical efflux of ley line energy, which is probably the root cause of the patient's cognitive disturbances. Some animals have keen awareness. They sensed something abnormal in this area and fled. Leaky ley lines sure can cause a lot of damage, huh? Like how plants have preferred growth conditions, we also gradually habituate to our surrounding environment. Climate, temperature, humidity, intensity of ley line energies. When people live under fixed conditions, they reach a sort of homeostasis with their environment. This equilibrium is broken when the surrounding environment abruptly changes, causing people's bodies to react in abnormal ways. If normal fluctuations in temperature occur, then our bodies automatically adjust. However, the average person cannot adapt to changes in ley line energy, and so they fall ill. Then why are we okay? I'm not sure why you are, but he and I are fine because our elemental capabilities allow us to adapt to this kind of change. Of course, it's not a good idea to spend too much time in areas with concentrated ley line energy. The only one who can freely traverse this place is probably the mechanical crab. That's about it for the investigation. Help me find an open space. I want to test something. Environment. No wind. Target parameters. Normal. Setup complete. Excellent. Looks like it's working. What's this? A purification device I made.
It can absorb excess ley line energy and temporarily stabilize an area. What a neat thing! Let's set up more and cover the entire region! I wouldn't mind if that would actually work. Unfortunately, once this contamination is present, it isn't something that a few purification devices can fix. The purification devices have their limits. At best, they can only prevent the contaminated region from expanding temporarily. If we want to permanently eradicate the contamination from the ley line effluents, we'll need to tackle the source. That's right. Huh? The mechanical crab is acting a little strange. Something's approaching. So that's it. Now that the ley line energy has stabilized, the monsters that had left are starting to return. Get rid of them quickly. Don't let them get close to the purification device. Whirling snow! Rain outlines your fate. Phew! That's all of them. Hey! Where are you? Wait for us! Let's hurry and keep up! The mechanical crab went that way! Let's keep up! Help! Help! Shake it and stir! Yahoo! Time for takeoff. Can't handle your drink. Witness the power of Guhua. Know my soul. Take flight. Kamisato art. Sometsu. Yeah. Spare me! Please spare me! Hey, are you okay? These injuries are superficial. Don't move. I'll patch you up. Who are you all? What happened to those mechanical monsters? Don't worry, we took care of them. Oh, good. That's, good. It's a monster! Hurry, attack it! How do we explain this? Krabby here isn't a bad guy. It heard you shouting for help and brought us here to rescue you. It's faking it. It has to be. Maybe it's gonna partner up with the other mechanical monsters and kill me. Do you know what's inside the forest? It's all crawling with mechanical freaks. I just came here to pick herbs, but I accidentally went into the contaminated region and almost died. I gotta get out of here. Ah, yes. I have to escape. Be careful. These mechanical life forms are up to no good. It'd be best if you stayed far, far away from them. No wonder the academia wanted to completely ban the existence of mechanical life forms. Those things should be annihilated. Are you okay? His inarticulate speech and bodily tremors indicate psyche disruption. He's been inside the contaminated region for too long. We've purified the ley line energy over there. Follow this path out and you'll soon see the village. When he gets to the village, someone will bring him to Kale for help. I already prepared medication that will return him to normal. So, you think you did a good job and want a part as your reward, huh? It's so hard to understand. All right.
Regardless of what you're thinking, you did some real good this time. That's why I'll give you another mechanical part. Need any help with it? Guess not. Well, make sure to hang on to it. What was going through your owner's mind when he made you? I wonder. You're like a giant mechanical crab on the outside and a fluffy little hamster on the inside. And also, how do you feel about that person saying that you're as evil as the other mechanical life forms? Okay, it definitely doesn't understand you. It seems like it possesses limited understanding, only towards matters related to mechanical components. Help others to get parts, that's probably its thought process. As for why it, rather, its owner, is collecting so many components, I'm not sure. It's getting late. Let's set up camp for the night. We'll explore further tomorrow after a night's rest. Hey! Over here! Come on, you big lummox. Raise your head and look up. Here we go. Let's set up camp here. All right. Paimon also thinks it's a good spot. Oh. Any particular reason? This place is perfect to put up a big tent. We can also set up a cooking pot and cook tons of delicious food. You're not wrong. But the primary reason for choosing this place is because its higher elevation keeps us away from the water vapor below. Rainforests are very wet. You should always be careful when spending the night in damp places. For the next tasks at hand, let's divide and conquer. I'll set up the tent. You'll be in charge of making the fire, and Paimon will forage for edibles nearby. Leave it to Paimon. Paimon's a pro. I'm not expecting that much. Just do what you can. That's right. You can use rushes to start a fire in the wilderness. Their piths are relatively dry and can be readily set aflame. The downside is that they produce a lot of smoke. Traveler, Tainari, Paimon couldn't find any food. Paimon didn't know that rainforest had so many interesting plants until we came here. There were all sort of weird-looking mushrooms, but Paimon didn't know which ones were edible. Paimon also saw wild berries on the ground, and Paimon was gonna fly over and pick them up, but the dead leaves on top suddenly started moving. It freaked Paimon out. Those were probably dead leaf butterflies. They camouflage as dead leaves to evade predators. My guess is that they mistook you for a bird when you flew over, so they fled. Little did they know that you were more scared than they were. Never mind. The tent's up, so you two go rest. I'll forage for food. Oh, you found some already. Paimon understands it this time. It wants mechanical parts again. Sorry, no part this time. That task wasn't important enough. If every little thing resulted in a reward, then it might start to take advantage of the system. I'll note little things like this, and give a cumulative reward at a later time. That is one reason. It looks really sad. After some further thought, it might come up with some weird misunderstanding if I don't give it something. All right, here's another for you. I'm off to prepare dinner. We'll take shifts on lookout duty tonight. You two can sleep first. I'll wake you up later. We need lookouts? Yes. Even though most animals fled because of the ley lines, we can't completely let down our guard. It's settled then. I'll set up some pest-repelling devices so, poisonous insects don't come crawling into the tent. Have a good night. Not too good, though.
everyone's getting sleepy. Is this because of the ley lines? It's been a while since we camped outside like this. This feels like when we just started adventuring together. Nighty-night. You're awake earlier than I expected. Did you sleep well? You have to maintain constant vigilance in dangerous places like this. Yawning all the time like that is no good. If you can't stay awake, it's okay. Go sleep some more. I'm not tired yet. Really? You don't need to push yourself. I'm used to staying up all night, because many plant and animal species can only be observed during nighttime. Speaking of which, have you seen the crab? It was scampering around over there just now, but I don't know where it went. So you can tell, my suspicion is less towards the crab and more directed to its unrevealed owner. A ley line effluence of this magnitude occurred without any warning. Someone probably disrupted the natural flow of the ley lines. Until we fully understand the situation, take extra caution. The academia has banned mechanical lifeform research for years, so the origin of these creatures is very suspect. Topics related to mechanical lifeforms were popular in the Sponta mod for a time. Some of my juniors had also thrown themselves into such research. They proposed an intriguing idea. Use our knowledge to create a new and However, no matter which modules or parts are installed, a machine is innately a construct that receives and executes commands. They can never possess self-awareness like us or other living organisms. In their pursuit to discover the differences between mechanical and biological life forms, zealous researchers performed unregulated vivisections and other absurdly cruel experiments on animals. Research on mechanical life forms was thus banned. The irony is that the researchers became even more impetuous afterward. Who knows? Maybe the subject will be unbanned in a few years. That's a difficult question to answer. I am interested in the topic of mechanical life, but I don't like the researchers' attitudes. It's just my personal opinion. My ancestors, and the Veluca Shuna of the desert, coexisted together and support. So to me, all life is important. To understand life, you must first respect it. Life is not an expendable commodity, and knowledge should not be wielded like a scepter. These are the points of contention I have with some researchers, and why I left the academia. Once you start placing yourself above other life forms, I mean, what kind of results do you expect to get from researching pure life with impure intentions? Really? Well, I'm glad to hear it. Coffee? Did you prepare this for us? All right. Seeing that you're working so hard to help out, I'll give you another part. You're not planning on using it? Many of your own parts are critically degraded, and you're running low on power. All right, suit yourself. Oh, and thanks for the coffee, but I'm about to go to sleep. Leave it with him. The night watch is yours. Stay safe. Sorry. Paimon slept through the entire night. Really? You're not mad?
Don't worry. Paimon will be sure to stay awake next time. Good morning, Traveler and Paimon. A quick question. Do you feel off at all? Me too. The farther in we go, the closer we get to the source of the ley line effluence. We'll be heading out earlier today. I'll take down the tent and... Is there something we can do? extinguish our fire so we don't set the entire forest aflame. Also, retrieve the pest-repelling devices from last night. We don't want to affect the ecosystem here. Got it! Paimon will take care of the fire. All right, let's meet back here later. All right, it's about time to head out. As we go further in, we may encounter more berserk machines. The effects of the ley lines will also increase. If you're struggling, it would be wise to avoid conflict. Try to conserve as much energy as possible until we reach the source of the contamination. As I thought, the closer we get to the contamination source, the more mechanical monsters that appear. Think you can bully me? Let's play! Body and mind, let me weave you a bird. Whirling snow! Time to act. No, my sword! Think you can get away? Shake it and stir! Diana special! Witness the power of good. Take flight! Sakura swirl! Whirling snow! It stopped here! Upon closer inspection, the plants here are really different. Ley line energies are also stronger here. This may be the place we've been looking for. Ready yourselves? We're going in. There's a ton of mechanical monsters here. Who made this place their lair? Looks like there's no way to sneak by. Let's take care of them quickly. And shroud! Here we go! No, my sword! One with the forest. Whirling snow! Yahoo!
see? Yeah. Take flight! What is this? Leyline energy is spilling out from here. This device. It's extracting energy from the ley lines without end. Who in the world would do this without considering the consequences? The ley lines won't be able to repair themselves if their flow is perpetually disrupted like this. That's terrible! We have to stop it! Paimon see... Paimon doesn't see controls anywhere! Standing here is equivalent to being directly showered in leyline energy, which may cause irreversible damage to your body. Take Paimon and get out of here. I'll see if I can find a way to turn this thing off. But you're also vulnerable to the ley lines, right? We're staying! We can't leave you here by yourself! Then let's look for it together. If there's no control unit here, then there must be a trap door somewhere. You know where it is? Hey! Wait for us! What's this? It'll only show up if you step on it? Be careful and watch your step. Look! Someone's here! Are you the one that's taking the ley line's energy? Turn off that machine now! Why aren't you saying anything? Too ashamed? His body is cold. It's emaciated, and his eyes are sunken, likely from chronic malnourishment and stress. He collapsed and never got back up. What exactly happened here? Almost forgot about you. Here. This is the last one. What is it doing? अरे कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। बिजी हो तो कोई बात नहीं, मगर यहाँ पर स्ट्रीम पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गैरी और कुरकुरे और टोमेटो जो भी आपका नाम है, वेलकम टू द स्ट्रीम। आ गई, यही बड़ी बात है भाई। इतनी देर तक वो हमारे गेमिंग स्ट्रीट भाई थे, मगर वो चले गए, इसलिए मैंने वॉइस ओवर बंद कर दिया था। और अभी फ़िलहाल तो मैं ताइनर का स्टोरी क्वेस्ट कर रहा हूँ। We should find a repository of research documents if we keep going. अच्छा, GTA। अच्छा यार, बहुत बढ़िया है। खेलो खेलो, कोई बात नहीं। फ़िलहाल तो मैं ताइनारी का स्टोरी क्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो जो मेरा अभी इवेंट ख़त्म होने वाला है वो, उसमें ताइनारी का क्वेस्ट करना ज़रूरी था, इसलिए वो ताइनारी का क्वेस्ट अभी मैं कर रहा फ़िलहाल, स्टोरी क्वेस्ट। The file room will definitely give us some clues, so let's go take a look. Maybe we can piece together what happened here. पीसी में ज़्यादा चलाना नहीं आता, बिकॉज मैंने 8 डे पहले लिया था। अच्छा, पीसी 8 दिन पहले लिया था या गेम? मेरे हिसाब से पीसी आपने पहले लिया होगा, गेम अब लिया। This place is very secluded. It's a Did you two find anything? हाँ, तो 8 दिन पहले आपने पीसी लिया था। There are a lot of lab notes, but it would take way too long to read through them all. I found a tape recording used for an experiment, and based on its serial number, it's from
2 years ago. Tape recording? अरे थैंक यू थैंक यू। भाई साहब मुझे आज बहुत नींद आ रही है। ठीक है 12 बज चुके अभी, 1.5 घंटा पूरा हो चुका है, मगर अभी हम अपना टारगेट पूरा करेंगे 2-2.5 घंटे का, उसके बाद अपन सोने जाएंगे फिर। Yes. Espantamod created a device that visually records experiments and consolidates the final production into a tape. चक्कू पांचाड़ और सब नंबर जैसे मेरे साथ। अरे सॉरी आप यहाँ से चले जाओ, आप यहाँ से चले जाओ, आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है, आप यहाँ से पहले चले जाओ। However, these devices are expensive to make and aren't भाई मैंने फेसबुक पर भी मतलब लाइव स्ट्रीम करा है, लाइव स्ट्रीम डायरेक्ट दो प्लेटफॉर्म मेरे पर चल रहा है। ये फैमिली फ्रेंडली अकाउंट है, यहाँ पर आप जैसे लोगों का कोई काम नहीं है तो प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। ठीक है अरे तुमने भाई ये चक्कू पांचाड़ ये फेसबुक से मुझे देखो यहाँ पर दिखा देना ना, मैंने एक साथ दो प्लेटफॉर्म पर मैंने लाइव स्ट्रीम करी है, इसीलिए ऐसे दिखा रहा था फेसबुक पे भी और यूट्यूब पर भी, तो मुझे दोनों SMS एक साथ आते हैं। ठीक है ऐसा माजरा है ये। फेसबुक से भी मुझे मैसेज आते हैं और यहाँ से भी मैसेज आते हैं। Hold on, let me figure out how to play the tape. Okay, this should do it. Kakata? Kakata? Seriously, I look away for 1 second and you're gone? So, उनको क्या बोला था जो आपने बोला था, जाओ यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपको दिखाई देगा होगा, तो यहाँ पर देख लो उन्होंने क्या कहा था, देख लो यार ये पढ़ लो पहले, आपको पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा, या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और उसको पढ़ लो एक बार, इसलिए मैंने उनको जाने को बोला था। There you are. Look here. This is our new home. I, Abatui, will unleash my talents here and amaze those ancient fossils at the Academia. Oh, you're also quite happy. Kakata, do you know what we're about to do? Yes, I thought not. Listen up, Kakata. I'm going to make a mechanical life form that can be mass-produced. The technology will be unlike anything else that exists. अभी नहीं देखना और इग्नोर करना करो, बिकॉज ये लोग फिर रीटेक होते हैं। रीटेक होते हैं, मुझे समझ में नहीं भाई आप क्या कहना चाहते हो। I'll use mechanical organs and electric currents will course through them like blood. A steel cast heart that will beat forever, and a brain of myriad components that can think like mine. देखो यार, फेसबुक से मुझे पहली बार SMS आया, ठीक है, और ऐसे उनको ऐसा फील करवाना जैसे आप उनको इग्नोर कर रहे हो बस। अच्छा नहीं भाई, ये कैसा, ये यूट्यूब पर मुझे फैमिली फ्रेंडली वाला माहौल बनाना है, तो ऐसे भंगार लोगों का मेरे पास भाई ऐसे भंगार लोगों का मेरे यूट्यूब पर और मेरे चैनल पर या फिर मेरे पेज पर कोई काम नहीं है, तो उन्होंने आना ही नहीं। ऐसे भंगार लोगों ने आते ही क्यों क्या मालूम यार, मतलब मूड ख़राब कर देते पूरा।
Inspiration from the ruins and the research that the पागल कहीं academia के। had banned. I hope everything can start anew from this place. When you can understand our language and live among us, you will no longer be a boring machine, but a truly living being. It's fine. You will understand. One day, you will understand me. Karkata is the mechanical crab, right? And that researcher named Abatui said he wanted to prove something to the academia? ठीक है, अभी देखो यहाँ पर भाई ऐसा बंदा मेरे चैनल पर पहली बार आया था, इसलिए भाई साहब मतलब दिमाग ख़राब हो गया मेरा, क्योंकि इस ऐसा माहौल बनाने में मुझे बहुत मौसम अरे क्यूटनेस दिखाने में भाई तुमसे अच्छा कोई नहीं। और भाई साहब बाकी सारे बंदे कहाँ हैं क्या मालूम। 1.5 घंटा हो गया मेरी स्ट्रीम को, अभी तक कोई आया नहीं है। स्ट्रीट गेमिंग आ चुके हैं, हिमांशु भाई पहले आ चुके हैं, ठीक है। हिमांशु भाई मेरे स्ट्रीम पर आ चुके हैं, फेलिक्स भाई पे आ चुके हैं, और अपने थंडर भाई बाकी है, और जेसी भाई, ये दोनों बंदे हैं जो मेरी स्ट्रीम को रेगुलर देखते हैं, ठीक है। थंडर भाई और जेसी भाई। थंडर भाई का दूसरा नाम है सुमित, ठीक है। तो सुमित भाई भी मेरी स्ट्रीम पर आते हैं, मगर आज क्या हो गया क्या मालूम, आज नहीं आ रहे, वो कोई काम होगा उनको, नहीं तो 12:19 हो चुके हैं। देखिए अभी क्या होता है यार, ये स्टोरी जल्दी ख़त्म नहीं होती है। I remember now. I had a junior researcher named Abatui. He was expelled from the academia for researching mechanical life forms. Junior researcher? Yeah? What's wrong? Nothing. Paimon was just wondering, doesn't Abatui look older than you? He is, but academic progression isn't tied to age. I finished my studies a while ago, so subsequent students generally considered me as their senior. अरे वाह 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 वाह, तो इसकी प्रोग्रेस जल्दी हो गई, इसलिए उसको अच्छी पोस्ट पर डाल दिया, ऐसा लग रहा मुझे। Of course, age can be an issue. For a while, people always dragged me into pictures. I felt like some kind of animal on display. तो इसके पास मतलब ये एक्सपेरिमेंट करते करते इसको कान आ गए, उसको पूंछ आ गई। That isn't important. Let's go and see if we can find other tape recordings. अब समझ में आया मुझे, इसको कान और पूंछ क्यों आ गई। ये रिसर्चर। अच्छा, टोमेटो भाई, लोल। Pipes continue further. Let's head in. वेलकम टू द स्ट्रीम टोमेटो भाई। मुझे पता है आप कौन हो, मगर मुझे टोमेटो बोलना पसंद है। आप जो भी अकाउंट लेकर आते हो उसी का नाम लेकर आपको पुकारूंगा मैं। That's quite the time gap. I wonder what happened in between. It's rare that you malfunction because of an operational error. Seems that making coffee is still somewhat difficult for you. Or is there an issue with my set parameters? कुरकुरे भी आ गई। All right, there you go. आपको सबसे ज़्यादा किसकी स्ट्रीम देखना पसंद है मेरे अलावा, ठीक है, मेरे अलावा किसकी स्ट्रीम देखना पसंद है यहाँ पर बता सकते हो आप। Water entered the Keela and caused it to short circuit, so it couldn't receive signals from the ganglion. Look at me, talking to you like this. You can't understand me anyway, can you? It's fine. I swapped in some new parts, so you should be all right now. Try moving around. Everything in working order? Be more careful next time. We're tight on money right now, so we don't have a lot of parts or power to spare. I'm glad. Karkata, did you know? Yesterday, I dreamed that you could talk. प्रीमोडेल और AKACIS लाइव, और आप हीरो इज लाइव, और
हीरो भाई साहब वो पसंद है मुझे। उसके बाद फ्रॉस्की नाम का बंदा है ये, उसकी स्ट्रीम देखना मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद देखो खुशमुख नाम का एक बंदा है भाई, उसके 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं अभी, 500 से 700 हो चुके हैं, वो तीसरा हो गया। और उसके बाद द एंडरमैन, ठीक है, द एंडरमैन जो कि हमारे चैनल को जिन्होंने प्रमोट किया था, ठीक है, द एंडरमैन जिन्होंने मेरे चैनल को प्रमोट किया था, उनकी वजह से मेरे 1-2 दिनों में 12-13 सब्सक्राइबर्स बढ़े थे। तो उनका बहुत शुक्रिया है, मेरे मतलब उनके बहुत उपकार है मेरे ऊपर। और द एंडरमैन, तो द एंडरमैन मेरे भाई मेरे स्ट्रीम पर आए थे और उन्होंने मेरे चैनल का प्रमोशन किया था। उनका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। अगर आप उनकी स्ट्रीम देखते हो तो उनको मेरी तरफ से शुक्रिया बोल देना। जीएनएस लेजेंड का चैनल ग्रो करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसे बंदे दिए भाई जो मेरी स्ट्रीम रेगुलर देखते हैं, स्ट्रीम में कौन सा भी कंटेंट हो वो बोलते हैं, मेरे साथ बातें करते हैं, मुझे बहुत पसंद आता है। और मुझे ऐसे लोगों की मतलब ज़रूरत है भाई, क्योंकि बात ऐसी है कि मैं मतलब हार्डकोर गेम नहीं खेलता, ठीक है, हार्डकोर गेम नहीं खेलता, एज अ कैजुअल फ्रेंडली एकदम गेम के हिसाब से गेम को खेलता मैं। क्योंकि गेम भाई ग्रैंडिंग के लिए नहीं बना, ये स्टोरी और काम मतलब एडवेंचर और नए एक्सप्लोरेशन, नए जगहों का एक्सप्लोरेशन, क्वेस्ट पूरा करना, पजल सॉल्व करना, इसके लिए ये गेम बनाए हैं। बस याद रख, वो बहुत फैमिली फ्रेंडली है, 18+ बिल्कुल नहीं आता। बस याद रखना, अलोन देखना उनको स्ट्रीम भैया। अच्छा बढ़िया है। तो ये आपका ओपिनियन है, बढ़िया है। मगर जैसा मेरा खेलना है भाई, मतलब बातें करते करते मुझे खेलना पसंद है ज़्यादा से ज़्यादा, और ग्राइंड करना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं। थोड़ा बहुत टाइम मिला तो करता हूँ मैं, मगर सिर्फ कैजुअली गेम खेलता हूँ फिर मैं। Too bad it was just a dream. Forget holding a conversation with me. You're so simple that you probably wouldn't even notice if I died. कुछ टाइम बाद मैं भी बन जाऊंगा। क्या बन जाओगे क्या बन जाओगे भाई? 1 से 2 वीक्स ओटी। यूट्यूबर बनने वाले हो क्या? मेरी तरह लाइव स्ट्रीम करने वाले हो? अच्छी बात है, अगर लाइव स्ट्रीम कर रहे हो तो हम भी आएंगे आपकी लाइव स्ट्रीम पर। मगर भाई मुझे टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है, मेरे हिसाब से देखो, मुझे अपनी खुद की स्ट्रीम के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता। तो ऐसी बात है, क्योंकि मुझे 9 से 9 घंटे पर काम करना पड़ता है, इसलिए मुझे मोबाइल खेलने का टाइम ही नहीं मिलता। मुझे सिर्फ यही टाइम है 10 से 12, 11, 1 बजे तक, उसी टाइम में गेम खेलता हूँ मैं। Never mind. I should probably be worrying about next month's power. अच्छा, स्ट्रीमर यूट्यूबर शूट स्केयर कोई ना, हाय गुड मॉर्निंग बोल देना। अच्छा ठीक है। तो आपका स्ट्रीम का मतलब भाई टाइमिंग क्या रहेगा? और अगर आप हमारे डिस्कॉर्ड पर ज्वाइन हुए हो क्या नहीं मुझे पता नहीं, मगर मैंने अभी तक डिस्कॉर्ड ज्वाइन मतलब ओपन ही नहीं किया मैंने। कौन से नए बंदे आ चुके हैं वो भी मुझे पता नहीं अभी तक, मगर मैं अभी आज रात को देख लूँगा कौन से बंदे आ चुके हैं। और आप मुझे अपना चैनल का लिंक भेज दीजिए, मैं फिर मुझे मतलब पहले तो आप आपका टाइम बता दीजिए, मतलब आप किस टाइम पर लाइव स्ट्रीम करते हो, तो उस समय मैं आ जाऊँगा। After Abatui left the academia, everyone lost contact with him. I thought he was so despondent that he gave up on researching mechanical life forms. Instead, he had holed up here and continued his experiments. Paimon doesn't
feel like he's a bad person. He even changed out Karkata's broken parts. Why would he mess with ley lines? 1 से 3 या 4 से ज़्यादा 5 बजे तक। अच्छा 2-3-4 घंटे खेलते हो, मतलब 5 घंटे खेलते हो, 4-5 घंटे खेलते हो। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। मतलब आप हमसे बहुत बड़े यूट्यूबर हो, इसका मतलब ये है। अच्छा, और आपके सब्सक्राइबर्स भी मेरे मुझसे ज़्यादा भी होंगे मेरे हिसाब से। तेरा हॉर्स लेके आए। अरे भाई साहब, आप तो बहुत हार्डकोर गेमर हो भाई। नहीं, मैं इतना गेम नहीं खेलता। मुझे सिर्फ 3 घंटे मिलते हैं, उसी टाइम में जितना हो सके उतना खेलता हूँ मैं। मेरे पास 41 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। अच्छा बात है, तो एक सब्सक्राइबर्स और भी बढ़ा डालो भाई। एक सब्सक्राइबर्स बढ़ने के बाद ही आपकी इतने में हुए है ना 41 मिलियन। तो आपका चैनल का लिंक भेज दो मुझे, तो मैं आ जाऊंगा फिर देखने के लिए। There's also an undated tape in the wrong spot. It doesn't seem like Abatui put it there. Maybe Karkata helped him with sorting. It's hard to say. These are the last 2 tape recordings. Let's watch them. हाँ भेज दो, कोई बात नहीं। डिस्कॉर्ड में भेज दो डायरेक्ट। मेरा डिस्कॉर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डायरेक्ट डीएम कर दो मुझे, तो मुझे पता चल जाएगा फिर। और आपका नाम भी बता दो, उसमें आपका नाम क्या है वो भी बता दो मुझे, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि आप कौन हो। Sorry, Karkata. I was just thinking about something. Today might become a special day. In my recent experiments, I successfully gave you a living being's instincts. डिस्कॉर्ड में हूँ मैं, सेम नाम है गैरीडीएक्स। अच्छा, तो गैरीडीएक्स के नाम से ही मुझे डीएम कर दो फिर। When you're low on power, or if one of your parts is damaged, you will prioritize your survival command and proactively recharge or replace your parts. That is a very dangerous thing. And today, I did something even more dangerous. I've officially activated the 3rd generation ley line extractor. The ley lines will serve as our power source from now on. Conducting research on mechanical life forms requires a large amount of power. Even if I scrimped and saved, the more I have wouldn't last for long. I'm also getting tired, Karkata. I don't know what's driving me to continue with this research anymore. They say that even if it simulates the operation of a living creature's organs, a machine is still an ice-cold tool. I want to prove them wrong. I want to turn you into a living, breathing, and talking being. भाई साहब, इसका सपना तो कुछ अलग ही है, एबर्टन। I'm not talking about anything cheerful, Karkata. अच्छा। Modules for language, emotion, and movement. I've been working my absolute hardest to augment and refine your functionalities, but I've never seen an effective response. नाइट बॉट बात कर रहा है। मस्त है, कुरकुरे नाइस। और बताओ, ये कौन है भाई नाइट बॉट? क्या कुरकुरे भाई साहब? You are my finest success, but even you can't understand. बढ़िया यार, अब नाइट बॉट भी आ रहा। All you can do is execute limited responses based on preset commands or keywords. आप तो नाइट बॉट हो ना, आपको तो पता ही होगा, जो कि आपने अपना नाम डाला है उनकी फिरकी लेने के लिए। ठीक है, उनकी फिरकी लेने के लिए आपने उनका नाम डाला है, तो अच्छी बात है। मगर हम आपने खुद के नाइट बॉट से क्या कहे कि इन्हें का मेरे स्ट्रीम पे नाइट बॉट आ चुका है तेरा जुड़वा भाई, तो वो उसको क्या बोलेगा? इसका मैंने फंक्शन नहीं दिया मेरे नाइट बॉट को अभी तक,
कि नाइट बॉट कैसे बातें करे, और हमारा नाइट बॉट हिंदी में बात करता भाई। ये वाले नाइट बॉट हिंदी में बात करते, अच्छी बात है, हम समझ भी पाते, मतलब ज़्यादा अंग्रेजी नहीं आती मुझे, मगर ये नाइट बॉट अच्छा है मेरे हिसाब से तो। Carcata, I wish you could speak to me, even just. Yes, you cannot understand me, so you cannot answer me either. It is what it is. In a few days, I'll sell the failed ley line extractor for some more and continue my experiments. Life goes on, and I have to as well. I don't have any other choice. चॉइस नहीं है तेरे पास? अरे तेरे पास बहुत सारी चॉइस है भाई, ऐसी फालतू चीज़ों में मतलब दिमाग लगाता है ये। This is new. If I place another 2 control modules here to simulate the brain's thalamus. Oh, of course my heart decides to act up now. Why did I cut medication from our expenses? Carcata, come help me. इसको कुछ समझ भी नहीं आएगा। हम बॉट अच्छी होती, हम जैसा नाइट बॉट तुमने किया है मिलते, अगर हम तो समझती तो सही होती। भाई साहब ये अरेबिक हो गया अभी हमारा नाइट बॉट। ये नाइट बॉट थोड़ा अरेबिक का मतलब भाई ये मार रहा, अच्छी बात है। तो ठीक है, पर्दे के पीछे कौन है एक बार बता दो। नाइट बॉट भैया मुझे लग रहा है ये कुरकुरे भाई साहब होंगे जो हमारी फिरकी ले रहे अभी। Strange. Oh no, I have to shut down the extractor. Shut it off. If we let them recharge indefinitely, they'll go out of control. Right. I never input a command to shut down the extractor, so you don't understand what I'm saying. पर्दे के पीछे ग्यारी भाई, कुरकुरी भाई, टोमेटो। मुझे पता था मुझे। अरे यार इस बंदे का मतलब थोड़ा हाल बेहाल दिख रहा है मुझे। In the end, it's just like the academia said. Mechanical life forms only bring danger. My research, was there any point to it at all? I'm sorry, Carcata. In the end, I still wasn't able to turn you into a true mechanical life form. अरे यार गया बंदा ये। I see. So, the ley line effluence was an accident. After Abatui's unexpected death, the mechanical monsters were driven by their instincts and continuously drew out power from the ley line extractor. This eventually resulted in severe damage to the ley lines. Paimon understands. Then why didn't Carcata go haywire like the other machine? Because Carcata is different from the other machines. अच्छा तो ठीक है भाई, जल्द से पीको मीको बहुत दर्द होती है। भाई साहब आपके कितने अकाउंट है? कुरकुरे, टोमेटो, गैरी, नाइट बॉट, पीको मीको, बहुत सारे अकाउंट है आपके। To Abatui, for a machine to truly be considered a mechanical life form, it must possess features similar to any other living organism. It should be structured similarly, it must be able to cry and laugh, and it must have the capacity for independent thought. अच्छा भाई साहब यार ये क्वेस्ट पर मुझे पूरा करना पड़ेगा जल्द से जल्द, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम बहुत कम है अभी। Perhaps only by building such a machine could he have the academia acknowledge his protracted research. But if he had slowed down and saw Carcata as a friend instead of as an experimental product,
he would have noticed. Karkata can't speak, and yet it cares about Apatui far more than it does about itself. What does that mean? You'll see in a bit. But before that, we have a more urgent task at hand. तो जल्दी टास्क पूरा कर दे भाई. Let's find the control unit लगे. for the ley line extractor and shut it down. हाँ जल्दी करना पड़ेगा मुझे. चल ले लाइन. जल्दी फास्ट. More of this transparent flooring. It feels like a maze. अरे भाई साहब. अच्छा इधर जाना पड़ता है. ये कहाँ है? वो उधर है. अरे यार अब वहाँ पर कैसे पहुँचे? नाइटबॉट ने आपका. अरे यार यहाँ से जाना पड़ेगा क्या? ये इधर है. यार ये घुमा रहा क्यों मुझे? अच्छा ठीक है जल्दी फास्ट नहीं होता यार ये. Below us is the final room. The control unit is likely in there. The way ends here. Wanna try jumping down? हाँ जंप तो करना ही पड़ेगा. Here we go. And shroud. Shaken and stirred. Let's अरे nip that in the यार bud. ये मुझे बटन नहीं दबाना था. Rain outlines your fate. Rain cutter. One with the forest. Embrace the ice. Witness the power of Gugwa. Shaken and stirred. Can't see? जल्दी पूरा हो जाए यार. This should be the control unit. अच्छा क्या कर रहे हो?
हाँ अभी यार ये ताइनारी का क्वेस्ट पूरा कर रहा था भाई मैं, स्टोरी क्वेस्ट। Once we turn it off, the ley line extractor should also shut down. इवेंट नहीं, स्टोरी क्वेस्ट था जो इवेंट के बीच में आ गया। तो मुझे ताइनारी का स्टोरी क्वेस्ट किए बिना वो इवेंट का जो क्वेस्ट है वो पूरे आगे नहीं सरक रहा था, इसलिए मुझे ताइनारी का ये क्वेस्ट स्टोरी क्वेस्ट पूरा करना पड़ रहा है मजबूरी से। ये बात है भाई, नहीं तो मैं ताइनारी का स्टोरी क्वेस्ट नहीं कर रहा था, मुझे वो इवेंट का क्वेस्ट पूरा करना था अभी यार। हाँ Without an external... Oh, but I bet you two are more worried about Carcata. Let's head back. जल्दी head back. जल्दी यार, फटाफट फटाफट हो जा। अभी डेली मिशन कर रहा हूँ 64। अच्छा कर लो कर लो कर लो कर लो। कटसीन Carcata has been collecting parts because it thinks doing so will fix its owner? थैंक यू भाई, थैंक यू गेमिंग स्ट्रीट भाई, बताने के लिए थैंक यू। और हाँ अभी टोमेटो भाई अभी देख लो, मैं जब भी कट सीन आता, ठीक है, जब भी कट सीन आता मैं वॉइस ओवर बंद कर देता हूँ। सो सैड, मुझे भी रोना आया था। हाँ ना भाई यार, कट सीन एंड ठीक है। अभी जब भी ये कट सीन चालू होता है मैं अपना वॉइस ओवर बंद कर देता हूँ। However, it probably remembers when Abatui replaced its parts when it malfunctioned, and how that restored it to an operational state. It's true that Carcata isn't able to think or understand many topics, but it is like a small child that imitates what adults do. अरे यार ये तो बहुत मतलब सैड कट सीन था यार ये। Can't repair its owner, no matter how hard it tries. Yes, but the important thing is that it formed the thought of wanting to repair Abbott. Who knows how this thought came to be, but it has even suppressed the instincts that Abatui had installed. If it really is as we've predicted, this research truly will make waves in the academia. It might have been possible to achieve this with ancient technology, but no one has been able to do the same with modern tools. Yes. भाई साहब ये बंदा बहुत अच्छा था जिसने एक मशीन के अंदर जान डाल दी। Carcata, can you hear Paimon? Tainari says you're awesome. It reached its limit. It hasn't recharged this entire time, nor has it replaced its severely damaged parts. अरे यार ये भी जा चुका है अभी। It's truly a miracle that it managed to hang on for so long. I'm gonna go confirm that the ley line extractor has shut down. Come with me. Let them be alone for a while.
रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. The leyline extractor has ceased operations. Traces of leyline energy are still in the atmosphere, but the effluence's source has been stopped. The purification devices will handle the rest. Moving on. Those affected by the ley lines need immediate care. We'll put up an announcement on the bulletin board about the dangers of entering the contaminated region, and for symptomatic individuals to find Kale. जिंदा है क्या? According to the Academia's policies, we need to bring everything back. Research materials related to mechanical life forms will all be destroyed, and Carcata will be disassembled and sealed away. Just kidding. What the heck? You two should return first. I'll take care of things here. हाँ टोमेटो भाई जिंदा है अभी तक. ठीक है अभी देखो यार अभी ये पूरा करना पड़ेगा. ये खत्म होने के बाद अभी एक और स्टोरी लाइन है उसको भी खत्म करनी पड़ेगी. हो कोई हो जिंदा हो. अच्छा अच्छा हमको कुछ हो जाए ऐसा आपका भी हो नहीं सकता. और उसके बाद कौन सा डायलॉग है भाई? उसके बाद ऐसे मतलब ये डायलॉग को मिलाकर एक पूरा डायलॉग बन जाता. वो मुझे याद नहीं आ रहा यार, मैंने सुना था वो. Listen, the traveler hasn't rested very well. Also, it'll take some time to pack up all the research documents. You're not familiar with this research after all, so you won't be of much use here. Okay, तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा. Tell the Adventurers Guild that the incident has been resolved, and then get some sleep. We can discuss matters tomorrow. अच्छा. Oh, and don't talk about Abatui. The fewer that know about mechanical life form research, the better. अगर कुछ होता हो तो हम तो आप सब के लिए हार्ट में रहेंगे हमेशा के लिए. अरे भाई साहब बहुत अच्छी लाइन कही भाई, दिल खुश कर दिया आपने यार. आज मुझे मतलब ट्रैवलर जैसी नींद आ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही. तो भाई अभी 2 घंटे का टास्क अपना पूरा हो चुका है. 10-12 मिनट तक का स्ट्रीम करेंगे. ये ख़त्म होने के बाद बंद कर दूँगा भाई मैं फिर. नहीं तो थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं इसको, डीप वोड का थोड़ा फार्म करूँगा 4 राउंड. उसके बाद स्ट्रीम बंद कर देंगे फिर. Let's go back to Catherine. चलो चलो. अच्छा 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 ठीक है. अभी नहीं मगर अभी नहीं. ये बार ये स्टोरी क्वेस्ट पूरा होने दो, उसके बाद आएंगे. और फोपिस डिपोड और फोपिस मुझे गिल्डेड का फार्म करना था. ठीक है. गिल्डेड क्यों, मुझे फुल ईएम चाहिए अपनी नहिदा के लिए. और डिपोड क्यों कि सपोर्ट देंदरो अपना ट्रैवलर बनेगा. ट्रैवलर के लिए फोपिस डिपोड चाहिए मुझे. ओके ओके. Anyway, so the contaminated region turned out to be a leyline effluence deep in the forest. Things are already getting back to normal. I see. Thank you for your hard work. Thank you, Catherine. Once the excess leyline energy dissipates from the air, we should be able to make an announcement for residents to resume their normal activities. Okay. This is the stipulated reward. Please accept it.
थैंक यू आफ्टर लिविंग द अरे यार पूरा पढ़ने भी नहीं देते It's already damaged, but Paimon feels sad thinking about it getting disassembled. Oh, then how about we find Tainari tomorrow and ask him not to do that? पता है क्या ले लाइन क्या चीज़ है ले लाइन रुको आपको बताता मैं Tainari said that we would discuss matters tomorrow. We'll probably make him mad if we go now, huh? Alright then, we'll find Tainari tomorrow and tell him not to disassemble Karkata. R1 सोल का रूट्स अच्छा ले लाइन ये है क्या ये है क्या ये नीला वाला जिसको मैंने टैप किया ले लाइन मेरे हिसाब से यही होगा यस क्योंकि मैंने ले लाइन बहुत किया है गैरी डीएक्स ओके हाँ दोनों है ब्लू में हाँ ब्लू में चार कैरेक्टर लेवल अप मटेरियल मिलता और येलो में मोरा मिल जाता How are you feeling? Sleep well? We should go find Tainari. How do you think we should ask him? मैं सोया हूँ या नहीं ये जानना चाहता है वैसे मेरे अभी तक नींद ही नहीं हुई पायमान अभी जाना पड़ेगा मुझे जाना पड़ेगा फोपिस गिल्डेड ड्रीम के लिए तो ये है एकेडेमिया Keep your voice down. The lilac daphne, a daphne of the genus Familiaceae, has a strong anticonvulsant effect. It can also be made into an anesthetic powder. इतने बड़े बड़े शब्द क्यों डालते हैं थमेलियाई इनको समझ में आता क्या मालूम इनको समझ में आता होगा क्या नहीं Extrapolating from these two data sets, it would be particularly potent against Piscine species. Hey, make sure you're getting all this down. सही कहा उनको भी समझ में आता होगा क्या ना क्या मालूम यार ये कोलू कालू I thought I told you all to keep your voices low. Plants aren't afraid of noise, but your shouting is making my ears ring. You didn't disassemble Karkata? Why would I do that? But Paimon thought you said, according to the Academia's policies... So that's why you two barged in like barbarians at this hour. Fine. I suppose I wasn't clear enough about this yesterday. What I meant was, according to the Academia's policies, all products of research must be destroyed. That's why we can't let the Academia discover that place. Anyway, the first thing I did was repair Karkata. During my time at the Academia, I took an elective course at the Spontamod. Who knew it would prove useful one day? We then buried Abatui together. After organizing the research materials, I kept some as a souvenir. Most of it was burned to hide the evidence. I'm not with the Academia, so what do their policies have to do with me? On the other hand, I am the Forest Watcher of the Avidia Forest. Yes. I have a duty to protect all life in the forest. बहुत बढ़िया तैनारी. All life brought forth in this world has meaning, and Karkata is no exception. If it exists, then it shouldn't be carelessly abandoned or destroyed. भाई यार अभी देखो
जो अभी बाकी सारे बंदे मतलब वॉइस ओवर करते हैं, मैं उनका वॉइस ओवर मैंने देखा, उनके पास कोई ना कोई टॉपिक रहता है बातें करने में, और उनका टाइम भी ऐसा चले जाता। और मेरी स्ट्रीम पर देखो, मेरे स्ट्रीम पर सारे कैजुअली बात करते रहते, गेम के बारे में कोई जानना नहीं चाहता, क्योंकि सिर्फ मुझसे बातें करने आते। यार कितना मस्त माहौल है यार। ऐसा माहौल दूसरे स्ट्रीमर के पास है या नहीं क्या मालूम, मुझे नहीं पता, मगर ये माहौल मुझे अच्छा लगता है। That's great! Wait, you just said life form. You recognize Karkata as a true living being now? The possibility exists is all. It's hard to explain Karkata's efforts to repair Abatui. ये सब तो हमारे साथ नहीं होता है। अच्छा ओके ओके, मगर मैं ज़्यादा स्ट्रीम नहीं देख रहा ना भाई, 3-4 सालों से मैं ज़्यादा स्ट्रीम नहीं देखता कि हाँ अच्छी बात है, मगर मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि मेरी स्ट्रीम को देखने के लिए भी आते हैं लोग, या जो भी अभी नए नए लोग मतलब नए नए बंदे आ चुके हैं कि भाई अभी मैं बिगिनर हूँ, अभी 0 से स्टार्ट किया है, तो उनके लिए भाई मतलब बुरा लगता है मुझे कि यार जान दो यार, ये ऑफ टॉपिक हो गया, अपने गेम की तरफ जान दो फिर। Abatui only left behind a small portion of his research. Who knows how many commands he installed? और भाई बंदा है, उनके साथ भी होता है चैट। दहिसे में छोटा सा भावा क्या ये, मुझे समझ में नहीं आया भाई गैरी भाई। Maybe a conflict between all those commands resulted in this sort of behavior. बच्चा है क्या? From a more rigorous perspective, it is impossible to conclude that Karkata is a real life form. But the possibility exists. I am willing to believe in that. By the way, I'm not interested in continuing research on this subject. I'm just letting it hang out here because this place is relatively secluded. नहीं, मैं कहाँ है वो नहीं पता। आ जाएंगे अभी 1-1.5 साल बाकी है अभी। But as things stand now, it wouldn't be a bad idea to make it my research assistant. At the very least, it can record my experiments. 1-1.5 साल के बाद मम्मी आ जाएगी फिर, अगर आप ऐसा समझते हो तो। अलग माहौल बन गया यार ये, ठीक है। अभी मेरे आँखों की पलकें भी भारी हो रही है, मुझे जल्द से जल्द से इसको पूरा करना पड़ेगा और अपने 4 रेजिन जो है मतलब रिडीम रिडीम कर लिया भाई मैंने। जो कोड्स आए थे उनको सभी को मैंने रिडीम कर लिया है। अगर आपको चाहिए हो तो डायरेक्ट डिस्कॉर्ड पर जाओ, वहाँ पर जेंशिन कोड में मैं आपके ड्रीम में आके आपके हैंड्स काट दूंगा। अच्छा। What do you think? खत्म। चलो भाई साहब, कालू हो गया। When people at the academy, I have zero interest in group photos. But खा I जाऊंगा also पूरा। wouldn't just throw them away. I stored them all in a box. After coming back yesterday, I looked through them and found one with Abatui. I gave it to Karkata and it seemed happy. That's good enough. Okay. अर्ली फोटो, अरे वाह फोटोज है। चलो हमारा काम तो हो गया। अभी हम जाएंगे इसको फार्म करने।
पहले इसको फार्म करना पड़ेगा। कौन आया है? हमारे गैरी होता हो, आ जाओ भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ। 4 पीसीस को मुझे फार्म करना है। पॉइंट्स नहीं यार, मैंने अभी तक सेट नहीं किया यार, मैंने अभी तक सेट नहीं किया उसको। पॉइंट्स मतलब आपके आपको तो पता ही है ना भाई। आपको तो पता ही होगा। आजा भाई जल्दी से। होता हो यार, होता हो के लिए एक हीलिंग कैरेक्टर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि उसकी जो एचपी होती है जितनी कम हो तो उतना उसका डैमेज बढ़ जाता है मेरे हिसाब से तो। और मैंने एक हीलिंग कैरेक्टर लिया है। कमाल है यार। देखेंगे अभी क्या होता है। अभी ये पॉइंट्स भाई, ये मतलब ये पॉइंट्स का भी डाल दूंगा मैं यूट्यूब पे। और दायोना हीलर भाई, दायोना हीलर रखता हूँ मैं। प्रीमोजेम्स भी नहीं भाई, प्रीमोजेम्स नहीं है मेरे अभी तक। मोबाइल में क्या क्या सेट करो यार। Time to go. Kamisato art. Sumetsu. Take an answer! See? I'm here. My apologies. Let me lead you away. Think you can bully me? Take flight. यार सिंचू का स्किल भी हीलर करता है। अच्छा, अटैक एनर्जी रिचार्ज ये वाला अच्छा है। ईएम ये भंगार है। अब्दुल भाई साहब, आप हम आपको नहीं बोला सकते अब्दुल भाई, सॉरी। गैरी होता हो, ये होता हो के बहुत बड़े फैन लगता है, क्योंकि उन्होंने Can't handle your drink. Is that all you got? Kamisato art. Sumetsu. Take flight. Whirling snow. Now you test my patience. नहीं Shake it and stir. Let's end this now.
We'll meet again. Embrace the ice! My apologies! 12,000 डैमेज भाई साहब, ये डैमेज बहुत कम है मगर इनके होता हो के हिसाब से, मतलब ये मैचिंग नहीं हो रहा मेरे हिसाब से। तो अटैक बेकार पीस है भाई साहब, पीस अच्छे नहीं मिलते यार, ये प्रॉब्लम है क्या मालूम, अच्छे पीसेस नहीं मिलते। ये पहले ही जा चुके हैं। You are not welcome. Take flight! Suffer a swirl! ओहो फिलिस भाई, भाई यार कहाँ गए थे आप पंप से? Take it easy. Higher, higher, pants on fire. Coming to art. My apologies. खाए खाने गए थे क्या? ओके भाई, अभी तो 1 बज रहे, इस टाइम पे पर कौन खाना खाता है भाई? 1 बजे के 1 बजे कौन खाना खाता है? EM क्रिट डैमेज एलिमेंटर मैच, अच्छा पीस है ये, पीस अच्छा ही है मेरे हिसाब से। थ्री लाइव है भाई, जल्द से जल्द लाइक करो स्ट्रीम को, जो भी देख रहा है जल्द से जल्द लाइक करो। अरे थोड़ा लेट खाता हूँ, घर पर सब खा लेते हैं। अच्छा 3 टाइम्स डेफ मिला, अच्छा हाँ जगह है ना, मगर भाई मुझे हीलर चाहिए था यार। अच्छा अच्छा आजा आजा, कोई बात नहीं। अबे यार ये तो मेरी हील करना था मुझे, हील 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 जल्दी हील, जल्दी हील, हीलिंग हीलिंग, हाँ हो गया हीलिंग। हीलिंग की ज़रूरत है भाई। वेट करना 1 मिनट, अच्छा कर लेंगे, वेट तो करना पड़ेगा। एनर्जी रिचार्ज क्रिट डैमेज, अच्छा पीस है ये, थोड़ा रुको, अभी इसको कंटेंस रीजन में कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं अभी जल्द से जल्द। कंडेंस रीजन में अभी करने के बाद कैसा भाई, जल्द से जल्द ये ख़त्म हो जाते और उतना अपना टाइम बच जाता। फोर टाइम्स डिफेंड एंड 1 टाइम अटैक विथ, अच्छा थोड़ा रुको, फेलिक्स भाई आ रहे हैं हमारे। A blade embraces its duty.
as a jeweler cherishes their gems. थोड़ा रुको, अभी ये कंडेंस रीजन में अभी ला लेता, उसके बाद अपन फिर से स्टार्ट कर देंगे। मैं एलोन मस्क बैन गया हाँ, रॉकेट बना के उड़ रहा हूँ। मैं एलोन मस्क बन गया, रॉकेट बना के उड़ रहा हूँ। अच्छा। यो फिलिक्स भाई, हम जल्द से जल्द आ जाएंगे इधर। यो जेसी भाई, लो हम आपको फ्री का चेस्ट दे दिया। अच्छा, कौन सा? Today is a lucky यस, day. थैंक यू भाई साहब। ये क्या हो गया आपको? ठीक है, लेट स्टार्टेड। अरे सिली इनके पास, सिली है। होता हो, ये होता हो लवर है भाई। होता हो लवर की जय हो। डोरी, ये भी अच्छी हिरर है। Wanna come over for tea? डेलो का होता हो। अच्छा, फिर से वही ले लिए, तो चेंज करने की क्या ज़रूरत है? चेंज करने की क्या ज़रूरत थी फिर? वही लेना था तो। फ्री का गिफ्ट, अच्छा यार। मुझे बहुत सारा मतलब भाई इसका कंटेंट पता है कि इसको कैसा खेला जाता है। चलो, अब ये क्या हो गया? अच्छा, ये हो गया। होता इज माई बेस्ट कैरेक्टर, लव गर्लफ्रेंड सब है गेम की, तो क्या बहुत क्यूट है। हाँ अच्छा, My apologies. Is that all you've got? Kamisato out. Sumetsu. Patience. Whirling snow. Sakura swirl. Higher, higher, hands on fire. My apologies. Will meet. Take flight. Whirling snow. Think you can bully me? I'm... ओके, खत्म। खत्म भाई साहब, खत्म। चल जल्दी से ले ले। अच्छा मिल जाए यार। जियो डैमेज बोनस, स्टैट्स अच्छे इसके, मगर भाई साहब पीस अच्छा है, मतलब उसके स्टैट अच्छे थे मेरे हिसाब से। जियो डैमेज बोनस किसके लिए चाहिए था?
अच्छा ओके, जाना चाहते लगता है। What happened? A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. मेरे पास हेलर है। तो आपके होताओ DMG नहीं देगी। So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. ठीक है, कोई बात नहीं। उनको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्यों टेंशन लूँ। साइनो लेवल 80 वाला। इलेक्ट्रो। Guess we can rest a bit. ओके यार, इनका क्या है ये, बहुत टाइम लगाते गैरी भाई। कैसा लगा होता का ASMR है नाची। हाँ भाई, अरे पहले जा चुके हैं। इंटरनेट कनेक्शन अच्छा लगता है इनका। आजा फिलिक्स भाई। इन्होंने फिर से हिल कर दिया। गैरी यार, ये क्या बंदा है ये। Your sins weigh upon your soul. Take flight. Fire, fire, pants on fire. Let me have a go. Is that all you've got? Time to go. Whirling snow. No blade. I'm sick of this game. Take flight. Sketch. Let go of my embrace the ice. Higher, higher, hands up higher. It's a crowd. My apologies. Nowhere to run. खत्म। बहुत बढ़िया। एलिमेंटल मास्टरी अच्छा पीछे आ रही है। HP नहीं, अटैक। ये वाला अच्छा है पीस।
पीस अच्छे मिल रहे मुझे, मगर यार एलिमेंटल मास्टर वाले नहीं मिल रहे। गिल्डेड ड्रीम्स के एलिमेंटल मास्टर नहीं मिलते जल्द से जल्द। गिल्डेड ड्रीम्स के बहुत कम है, बहुत कम है भाई। मुझे फुल बिल्ड चाहिए उसका, उसके बाद मैं अपनी नहिदा के लिए बिल्ड कर सकता हूँ। अरे यार ये बाहर रहे, अरे रुको रुको रुको, ये बाहर ही रह गए। दर्द तेरे गए ये बाहर ही रह गई है। फेलिक्स भाई का इंटरनेट काम नहीं करा लगता है। बाहर Whirling snow. आ गया, चलो। अरे यार मैं अकेले। अरे सॉरी 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 सॉरी, क्या बोलो मुझे नहीं पता चला, मैंने डायरेक्ट बटन दबा दिया। सॉरी सॉरी। Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share? Where those the share the memories? 16% बैटरी बाकी है, अब 1:30 बज रहे हैं, तो जल्द से जल्द ये पूरा करना पड़ेगा। और जल्दी करो यार, मेरे पास टाइम बहुत कम है अभी। साइना मेरी जान जल्दी आ जा। Take flight. Surrender. You are not welcome. Judgment is upon you. Sunward You swirl. stand condemned. Guilty. My apologies. Is that all you've got? Whirling snow. Think you can bully me? Let's end this now. Diana special. Embrace the ice. Take flight. You stand condemned. Guilty. Now you're testing the patience. Whirling snow. Your sins weigh upon your soul. Your penance is due. My apologies. You stand condemned. We'll meet again. खत्म। Kami Sato clan 17. अटैक ऑन सैंड्स
HP पर एलिमेंटल मैच एनर्जी रिचार्ज। अच्छा वाला पीस है ये पीस अच्छा है भाई। चलो अभी जाना पड़ेगा मुझे, बहुत देर हो चुकी है, अभी 1:30 बज रहे हैं। ओके 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 ओके, ये लास्ट टाइम है, ये लास्ट वाला है, ठीक है, ये लास्ट वाला है। मेरे पास अभी और ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे सोना भी अभी। Whirling snow! Judgment is upon you. Guilty! Your penance is due! Stand condemned! Embrace the ice! God, my Send this now! No Whirling snow! I'm Now you're testing my Wait, bully me! Justice is served! Guilty! You stand condemned! This is due! You stand condemned! My opponent! खत्म। फोटो लेनी है इनको। फिर डैमेज एनर्जी रिचार्ज वाला डिफरेंट सैंड्स, बेकार पीस है ये। चलो बाहर चलो अभी। बाकी वाला अब कल करेंगे सुबह। फोटो भी लेंगे। चलो जल्दी से, अभी क्या सुनाना चाहते हो जल्दी से सुना दो। इवेंट जा चुका है भाई वो। रुको यार, ये क्या लगा रखा है इसने। कुछ अच्छा बजाओ।
अच्छा यार बस यही। धुन बनाने की कोशिश कर रहा है, धुन बनाने की। रुको थोड़ा। अरे भाई रुको ज़रा, रुको, सब्र रखो। रुको जी, रुको 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 रुको। डोंट Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are अरे यार those तुम who share memory? खुद का ही चला रहे कब से, अपना मेरा पूरा होने भी नहीं दो रहे।
कैसा लगा? कैसा था भाई ये? Fracture. Everyone hold hands. Starball. Thank you. ऐसा था सुन मेरी जान नहीं मुझे चलो भाई स्ट्रीम पे आता। ओके रुको रुको रुको। एक नहीं ओ Everyone hold hands. Hey, let me scribe. I see everything. Everyone hold hands. खींच ली क्या? Hey. उसे मेरे डिस्कॉर्ड पर भेजो। If you're not sure what to do next, how about I take you on a walk? And thanks for coming. Okay, I'm leaving. गेम चार्ज हो गई। Silly churl, Billy churl, silly Billy Hill.
लैग हो रहा भाई, लैग हो रहा। अभी बहुत मतलब 4% बैटरी बाकी है। One client, 2 clients, 3 clients. चलो भाई साहब, अभी गेम बहुत लैग हो रहा मेरा अभी। चलो भाई साहब, अभी गेम बहुत लैग हो रहा मेरा अभी। देख रहे हो ना, अब फिलहाल तो अभी इतना ही है। अभी गुड नाइट एवरीवन। ओके ओके, कल मिलते हैं फिर। गुड नाइट एवरीवन। tomorrow night at 10 PM IST. Peace out.